Today, last session of rectification of errors, and from day after tomorrow, you are going to start with bank reconciliation statement. So friends, in last session, we have seen some journal entries regarding rectification of errors, correct entry, wrong entry, and rectification entry. So before starting any session, first I'm going to explain you basic rules of accounts. Very, very important. How many of you have sent me these basic rules of accounts? Yes, let's check it. राहुल ने भेजा है, मनी मेंगलाई जी, अनया कुमारी, वेरी गुड. सूर्या कुमारी, आदित्य, वेरी गुड बेटा, गुड मॉर्निंग. सो बेटा, डोंट स्टार्ट accounts with real account, start with personal account. Personal account, debit the debtor. When debtor beta, when there is a sales, and when creditor, the creditor when there are purchases. Then debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver and creditor becomes receiver. Now you are aware about all these rules. We open first due relationship and then receiving giving relationship. Real account, debit what comes in and credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal and real account are carried to balance sheet and nominal accounts are transferred to P&L. Sir, if modern approach is there, asset minus liability is equal to capital. Asset shows debit balance, liability credit balance, capital credit balance. And in case of income minus expenses is equal to profit, income is pro gain, credit balance, and losses have debit balance and profit has credit balance. Expense minus income is equal to loss. So these are some fundamental basic rules of accounts by traditional approach and modern approach. Normally you should follow traditional approach. Sadhna Singh, sir, we're gonna miss you badly. Come soon with new chapters and waiting for you. Yes beta, definitely. जल्दी से मैं आ जाऊंगा. चैप्टर नंबर 6 ये हम लोग करेंगे साथ में. देन पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट. सो देयर आर मोर देन 50% सिलेबस है, तो डोंट वरी. एंड सेकंड वन, the other faculties please follow the same technique, though other faculties technique is different, might be different. Yes, maintain your 400 pages notebook, maintain your 100 pages notebook. Whatever important points you can write it in the 100 pages notebook, and 400 pages notebook is for your solving of all illustrations of study material and rectification of error. मतलब ये जो भी scanner questions है या all these questions you can write it in the 400 pages का notebook. Okay, so follow this technique from day one. No shortcuts beta for your study. Beta, those students who are not doing it in the proper way, बाद में बड़ा पछताओगे. इतना याद रखो कि पहले शुरुआत में आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया, सो एंड भी उतना ही डेंजरस होगा. इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज गुड, एंड पॉइंट इज ऑल्सो गुड. ये रिमेंबर दिस टेक्निक. और बेटा, दिस इज अ कोर्स जहां पे आपको सेल्फ डिवोशन देना पड़ेगा, इतना याद रखिए. मैं कितना भी आपको मोटिवेट करूं, फिर भी ये बहुत दिक्कत आने वाला है. चलो, ओके. सो now let's start with illustration number 3. I just want to tell you maximum problems. I'm trying to tell all scanner questions. So ये देखते हैं if time permits me. आज हम लोग 1:30 तक का सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो 1:30 तक, और मैक्सिमम क्वेश्चंस. तो आज मुझे आपसे बहुत सहकार्य चाहिए. पहली चीज, आज जितना भी मैं कवर कर रहा हूं वो आप सब लोग जल्दी जल्दी लिख के रखना, इतना याद रखो. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. इलस्ट्रेशन नंबर 3. आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3. A purchase of goods from Ram amounting to rupees 150 has been wrongly entered in the sales book. A purchase of goods from Ram wrongly entered in sales book. चलो, so write down बेटा correct entry. चलो जल्दी से लिखिए.
Okay. Write down format. Correct entry, wrong entry, rectification entry. And rectification entry. See, beta, what is correct entry? A purchase goods from Ram. So what is the entry, beta? Purchases account debit to Ram account. Format drawn, beta. Purchases account debit to Ram 150, 150. But you wrongly entered in sales book. But a sales book means whole entry is wrong. Whole entry is wrong. Ram to sales account. No common, बेटा कुछ भी common नहीं है. Ram common है, but Ram has credit balance in correct entry and debit balance in wrong entry. Okay. So now I'm going to write. So 150, 150. Now I'm going to write purchases account debit, same balance. So purchases beta same balance. This 150 only debit to Ram 150 credit. This is same balance credit. Now this Ram, which is in wrong entry, Ram, we are going to cancel it. So Ram को cancel करना है. How to cancel? By giving opposite effect. Opposite effect देके उसको cancel करना है. And then sales account has to be cancelled. तो sales account को debit देना है 300. So I hope you understood the entry. Purchases account debit to Ram. Purchases account debit to Ram. Then Ram to sales, and rectification entry will be. Yes, beta. What is the rectification entry? Purchases account debit, sales account debit to Ram 300. Yes, Varnika. Varnika is asking me, sir, I missed past 3 classes. Yes, beta. Last session was very important. Do one thing. Now try to attend this session. जितना भी समझ में आता है attend कर लीजिए. But remember, don't miss a single session without any specific reason. And if you missed any session of any faculty, try to cover that portion afterwards. Any reason, बेटा एक सिर्फ कहानी बताता हूँ. एक्चुअली ये मैं सिर्फ मोटिवेशन करना ये मेरा काम है बस, बाकी तो मैं आपके सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ. सिर्फ एक आपके मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ. व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, ठीक है, कोचिंग क्लास में तब क्या था, एक जमाना अलग था. तो कोचिंग क्लास में इतना सारा हम लोगों को बेटा सिर्फ नोटबुक्स भराए जाते थे, लॉजिक बीजिक ये आप खुद का कर लो. तब का बेटा एजुकेशन बहुत डिफरेंट था. अभी ये कंपटीशन बोलो या बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं, तो इसलिए क्या होता है कि हर फैकल्टी ट्राई करता है आपको बेस्ट टू बेस्ट समझाने का. तो प्रॉब्लम ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेरी दादी की डेथ ये हमारे घर में तब जब हुई थी, महाराष्ट्र में, मैं पुणे में रहता हूँ, तो तब डेथ हुआ था दादी का. और रात को 9 बजे उसको हार्ट अटैक आया. मैं घर में अकेला था. आई थिंक मैं सीए फाइनल में था तब, ये बता रहा हूँ ये. और सीए फाइनल के टाइम पे ये एकदम से मुझे समझा नहीं, हार्ट अटैक आया. और मेरे मम्मी पापा तब बिहार गए थे हमारे मंदिर के लिए.
तो मंदिर यहाँ पे तीर्थ स्थान था हमारा, तो बिहार में, तो वहां से आना मुश्किल था मिनिमम, क्योंकि रात को 9 बजे वहां से, तो आपको पता है बिहार की कंडीशन पहले क्या रहेगी, तो तब बहुत मुश्किल था 9 बजे निकलना। तो दूसरे दिन सुबह मेरे मम्मी पापा जो थे वो सुबह 8-9 बजे का उनको फ्लाइट मिला, वहां से निकले। पर मुझे इतना याद है, पापा ने मुझे फोन करके बोला, घर में हमारे मतलब दादी की डेड बॉडी थी, और वो डेड बॉडी रहने के बाद मतलब वो हम लोग वो आइस क्यूब वो उसमें रखना रहता है, तो वहां जाके हमने वो शिफ्ट भी करवाया। पर मुझे पापा का फोन, हमारे घर में एजुकेशन का इंपॉर्टेंस इतना था, पापा मुझे वहां पे, दादी का डेथ हुआ है पर पापा ने मुझे बोला कि लेक्चर को मिस मत कर, तेरा सीए फाइनल इज तेरा टारगेट है, और ये होता है डेडिकेशन, और तू वो मिस मत कर। ये जो भी है, हम लोग जो भी बाकी के स्पिरिचुअल जितना भी रहेगा तब तुझे आना है, पर तू तेरा लेक्चर मिस मत करना। और मेरा, मुझे याद है, एक भी लेक्चर उस कंडीशन में भी मिस नहीं हुआ था, एक्सेप्ट वो शाम का टाइम पे जो भी था, बहुत मेहमान थे, उस टाइम का लेक्चर मेरा मिस हुआ था। पर हमारे घर में टीवी भी उल्टा करके रखा जाता था, और कुकर की सीटी भी जो है ना, वो मैं जब पढ़ाई करता था और थोड़ा मैं वॉशरूम और इसमें जब उठता था, उस टाइम पे हमारे घर में कुकर की सीटी बजती थी। बहुत ऐसा एकदम आलीशान घर ऐसा नहीं था, कि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक मोटिवेशन रहने दो कि भाई कुछ भी होने दो, क्लास को बंक नहीं मारना है, कुछ भी होने दो, क्योंकि आपके पास इतने सारे, तब तो ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं मिलते थे, पर सपोज एक आध बार, अभी तो आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको इससे पढ़ाई कितनी करनी है आप रखो, मुझे अगले 6 इयर्स ये सिर्फ पढ़ाई करनी है, ये जहन में रहेगा। देखो, दो यू आर एकदम ये बोल सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आपने अब भी ठान लिया कि मुझे सीए बन के रहना है एनी हाउ, और आगे के जो 50 साल जो है ना आपके, नो रिटायरमेंट लाइफ, ये भी याद रखो, 25 से 75 तक तो जाओगे, ओके। तो बेटा चलो 60 तक भी गए तो भी बेटा आगे का रिटायरमेंट लाइफ नहीं है। और जो पैसा आप कमाओगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक इसमें, पर एक आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगा, वो अलग बात है। और आप भूखे नहीं मरोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, एटलीस्ट 30-40 हजार तो किधर से भी कमा के लाओगे ये डिग्री पे, ओके। सो क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप डिसाइड करो, और कितना डिवोशन चाहिए वर्णी का ये भी ध्यान में रखो, मतलब डोंट मिस अ सिंगल सेशन। चलिए, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम, राम टू सेल्स, परचेसेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सो ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट वन, अ क्रेडिट सेल, a credit sale of goods amounting to 120 to Ramesh has been wrongly passed through purchase book. Acha, same. Now purchase book. So write down, purchase book means whole entry is wrong. Purchase book means, beta, purchase book means whole entry wrong. Second one, okay. Ramesh to sales, Ramesh to sales, Ramesh account debit to sales. Write down Ramesh to sales. How much? 120. But you recorded through purchase book. So purchases account debit to Ramesh. Yes, beta, tell me in comment section anything which is common. Do you find anything which is common in this? Yes, beta, कुछ common है क्या? Yes or no? Tell me. No, nothing is common. सबसे तेज आंसर साधना सिंह as usual. 120, 120. Now Ramesh account is debited.
Ramesh debit. Beta inner column 120. Two sales, same effect. Two sales, same effect. Purchase, opposite effect. Purchases, opposite effect. And Ramesh already debited. So instead of debiting 2 times, amount will be doubled. 240. 240. Okay. Third entry. Third entry. Yes. Third entry, beta. On 31st December 2020. Yes, beta. Very good, Aditya ji. Now this is beta. This is both are error of commission. Both are error of commission. Next one. Better always start Anushka with correct entry, not with wrong entry. On 31st December 2020, goods value of rupees 300 written by Hari Saran and were taken into inventory on the same day, but no entry was passed in the books. Okay. So, what is the entry, beta? Sales return. Sales return की entry. Error of omission. Sales return account debit to Hari Saran. To Hari Saran. 300, 300. 300, 300. Sales return account debit to Hari Saran. 300, 300. Correct? Eh? Now, no entry in the books of sales return to Hari Saran. Yes, no entry. And last one, sales return account debit to Hari Saran. Again, 300, 300. 300, 300. So, sales return to Hari Saran. An amount of rupees 200 due from Mukesh Chand, which had been written off as bad debts in the previous year, was unexpectedly recovered and posted to his personal account. Okay. So what is the correct entry, beta? Now, yes, bad debts recovered. Now, bad debts recovered is your gain. And what comes in? Cash comes in. So cash comes in to bad debts recovered. To bad debts recovered. Cash account debit to bad debts recovered. How much? 200. But you wrongly entered cash account debit to Mahesh Chand. So, but what is common in this? You can see cash,
कैश अकाउंट कॉमन, करेक्ट है. सो नाउ टू बैड डेट्स रिकवर्ड, सेम इफेक्ट. टू बैड डेट्स रिकवर्ड and Mahesh Chand is cancelled. Mahesh Chand debited. Simple. And last entry, a check of ₹100 received from Manmohan was dishonored and debited to sales return account. Acha. So what is check dishonor entry? Beta, check dishonor means Manmohan again becomes debtor. उससे वापस पैसा आएगा. So check dishonor entry, he becomes debtor and bank account is cancelled. When we received check, at that time we pass entry bank to Manmohan. Now reverse the entry. Reverse is Manmohan account debit to bank account. So what is correct entry? Manmohan account debit to bank account. 100. Wrongly you debited sales return account. But it doesn't mean that bank is not correctly recorded. Bank is correctly recorded. So sales return to bank. 100. What is same? Bank. And what is going to cancel? Sorry, Manmohan has same effect and sales return is going to cancel. So Manmohan account debit to sales return. 100. So this is how we passed all rectification entries. Yes, over. Are easy check hai. ILU 3 completed. Bad debts recovered is nominal account, beta. Joseph, beta, it's a nominal account. Gain. Bad debts recovered is gain. Bad debts recovered is gain. Easy है. Yes. Scroll कर दूं. Scroll कर दिया. एकदम इजी टेक्निक है बेटा, एकदम इजी. चलो, ILU 4. ILU 4. Easy. Without opening suspense account and with opening suspense account. Okay. First we will do with opening suspense, and then without opening. The sales book total is short. Short means beta undercast. Undercast means same side. So अंडरकास्ट हुआ तो सेम इफेक्ट देंगे, ओवरकास्ट हुआ तो अपोजिट. ओवरकास्ट इज अपोजिट. So entry will be number 1, directly rectification में. अच्छा, राइट डाउन बेटा पहले. यस, राइट डाउन करेक्ट एंट्री. wrong entry.
rectification entry. Correct entry, wrong entry, rectification entry. Draw. Half page. 3/4 page. Chalo. So entry will be rectification entry, suspense to sales. What is the entry? Suspense debit to sales account. So beta entry is very easy. Suspense च्या debit ला, sales च्या credit ला. Okay. So suspense to sales 100. Okay. Suspense to sales. Ekdam easy. Chalo. Second entry. Overcast, undercast. Undercast is same side. Overcast is opposite side. Undercast is same side. Overcast is opposite side. Remember. Next one. Goods worth rupees 150 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. Okay. Achha, this is error of commission. This is error of omission. Goods returned by Green and Company. So what is correct entry? Yes, beta. What is correct entry? Sales return account debit. Sales return account debit to Green and Company 150. No entry. Sales का opposite balance beta sales return, sales credit तो sales return debit to Green and Company, and therefore rectification entry sales return account debit to Green and Company 150. Third one. Goods purchased 250 have been posted to debit of Gupta and Company. Oh. What is purchase entry? Chalo purchase के entry. Purchase is a खर्चा. Okay. So goods purchase beta अबे बेटा returned by Green and Company. Now one question is there, sir, returned by Green and Company. So tell me, return by means वो क्या होगा बेटा? It's a return by. Return to होता तो हमने रिटर्न किया. रिटर्न बाय हुआ तो उसने रिटर्न किया. उसने रिटर्न किया मतलब हमने पहले सेल्स किया होगा ना. हमने पहले सेल्स किया होगा. यस. चलो एक क्वेश्चन था बीच में आदिति का. तो बेटा आदिति एकदम सिंपल है. रिटर्न बाय कौन करेगा? रिटर्न उसने किया. उसने क्यों रिटर्न किया? क्योंकि मैंने उसको सेल्स किया था. मैंने रिटर्न टू होता तो मैंने रिटर्न किया. मैं क्यों रिटर्न करूंगा? मैंने परचेस किया इसलिए रिटर्न किया. एकदम सिंपल है आदिती. साळवी मॅडम असं का करतायत? किती सोपं आहे. चलो आगे. गुड्स परचेस rupees 250 have been posted to debit of supplier Gupta and Company. तो गुप्ता एंड कंपनी बेटा. Yes. Purchases account debit to Gupta and Company. To Gupta and Company 250.
250. Purchases to Gupta and Company, 250. Then purchases account debit, 250. गुप्ता एंड कंपनी को भी डेबिट दे दिया 250 टू सस्पेंस 500. बड़ा परचेस को तो डेबिट दिया बट गुप्ता एंड कंपनी को भी डेबिट दिया. सो परचेस कॉमन. गुप्ता एंड कंपनी 1 क्रेडिट 1 डेबिट, सो नो कॉमन. सो गुप्ता को क्रेडिट करेंगे. टू गुप्ता एंड कंपनी credited 250. Now this 250 we recorded and this wrong entry ka 250 we are going to cancel. So 250 again credited and suspense we are going to cancel. So suspense la debit 500. So beta suspense debit to Gupta and company. Easy छे? ये भी easy था? Yes. Sakti ji. Beta purchases account debit to Gupta and company. But we wrongly debited Gupta and company. We wrongly debited Gupta and company. So actually you should credit Gupta and company, but you debited Gupta and company. But it doesn't mean that purchases is not correctly recorded. Purchases is correctly recorded. Purchases is correctly recorded, but Gupta and company is debited to suspense. And therefore now purchase common. To Gupta and company once credited for correct entry and once credited for cancellation of wrong entry, and suspense account is cancelled. Okay, it's very simple beta, it's very simple. Sakti, understood? Sakti or Shakti? हाँ करेक्ट है आयशा. वेरी गुड बेटा. आयशा एकदम होशियार हो गई एकदम. अबू धाबी में ना बेटा तो आप. ओके उसने बोला था उस दिन. आई रिमेम्बर. चलो वेरी गुड. फर्नीचर परचेस फ्रॉम गुलाब ब्रदर्स 1000 has been entered in purchase day book. Okay. Gulab and brothers entered in purchase day book. Furniture purchase. So furniture purchased. What is the entry? Furniture to Gulab and brothers. Furniture account debit. Furniture account debit 1000 to Gulab and brothers 1000. But you wrongly debited to purchase account 1000 to Gulab and brothers 1000. What is common beta? Common. Gulab, Gulab. Gulab, Gulab, common. So furniture को debit देना है, same effect, and purchases has to be cancelled. So furniture account debit to purchases account 1000. When you have grip over this question, beta, you can directly pass rectification entry. But when you are in the learning phase, don't pass rectification entry directly. Try to write correct entry. Try to write wrong entry.
find out common and which are uncommon, correct entry, same balance, wrong entry, opposite balance. Very easy technique. Very, very easy technique. Yes. Very good, Shruti. Chalo. Discount received from red and black 15. Not entered in cash book. Better discount of cash book. Cash book means whole entry wrong. Now mark this as IMP1. Mark this as IMP. कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ मतलब टोटल एंट्री नहीं हुआ सर, टोटल एंट्री. Error of complete omission, not partial. Now students are making mistake. Sir, discount received is our gain and our creditor is getting cancelled. So red and black is our creditor. Now he's going to cancel. So what is the correct entry? Correct entry is red and black account debit to discount received. To discount received. But 15. But you are going to record it or not to record wrong entry, no entry. Now students are making mistakes. Sir, discount received में only किया नहीं. Red and black they debited. No. Cash book में गलती means cash book mistake means overall entry we have not passed. Okay. So here answer is red and black account debit to discount received. कैश बुक में गलत मीन्स पूरा एंट्री ओमिटेड. दिस इज कंप्लीट ओमिशन. आईएमपी कंप्लीट ओमिशन. कैश बुक की गलती, ओवरऑल गलती. इजी इजी है. And last one. Discount allowed to G Mohan 18 have not been entered in discount column. However, G and Mohan was correctly posted. Okay, sir. So here Mohan and company. Now these are better important points. E and F. In F, this is sixth one. F. Discount allowed account debit. It's a loss to G Mohan and company. 18. But you have not debited discount allowed. So suspense is debited only to G Mohan and company. So what is common beta? G Mohan, common. Discount you will give same effect and suspense opposite effect. So discount allowed account debit 18 to suspense 18. Very, very easy. Okay. Very easy, beta. Beta, wrong casting means wrong totaling. Subsidiary book ki casting means total. Casting means total. Wrong casting means wrong total. Sunil Sharma. 18 था तो डिस्काउंट 18 ही आएगा ना. ये क्या वाहियात क्वेश्चन था.
Okay. Now, if suspense account, acha, suspense account is also asking the question. See, if I open suspense account, so how to write it? Suspense account debited. Yes, beta. Suspense account debit to sales. Suspense to sales. Then second entry, no suspense. Third entry, to Gupta and Company. On the debit side, 500. And last entry में suspense is credited. So by discount allowed, 18. And what is by difference in suspense? By difference in suspense, 600, 600, 582. Difference in suspense is 582. So suspense account, very easy. Suspense account is opened. Suspense account, who sells to Gupta and Company by discount allowed by difference in suspense. Without opening suspense. Now, if this problem we solved it by without opening suspense. So, beta, how to write it? Without opening suspense. Write down without opening suspense. This is the second part. Serial number. Serial number. Account. Debit or credit. Then rectified statement. Then rectified statement. Sales account credit. Sales account credit. In first entry, sales account credit. Okay, suspense को नहीं देखना है, without opening suspense. So credit means we are going to write by wrong totaling or wrong casting, you can write by wrong totaling of sales book, rupees 100.
सेकंड एंट्री सस्पेंस था ही नहीं, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी. सो सेल्स रिटर्न डेबिट, ग्रीन एंड कंपनी क्रेडिट. सेल्स रिटर्न डेबिट, green and company credit. So this is how you can write this. So in statement, you don't have to write this because no suspense is there. Third one, suspense to Gupta and company. So Gupta and company credit. Gupta and company credit. By credit है तो by errors in posting rupees 500. Rupees 500. Fourth entry, furniture to purchase. Furniture debit, purchase credit. Fifth, एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं लिखना है. रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट. सो रेड एंड ब्लैक डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट. एंड लास्ट एंट्री, discount to suspense. So discount allowed debit. Now what you are going to write in debit? To omission of entry rupees 18. To omission of entry rupees 18. So without suspense, you will write these statements, rectified statements. Rectified statements you will write only if there is suspense account. Rectified statement only if suspense account. यदि सस्पेंस अकाउंट होगा तो ही ओपन करना है. वेरी इजी. But in exam, suspense account, if not given, if anything is not mentioned, so open suspense account. If nothing is mentioned, without opening suspense or with opening suspense, so I have given you answer. Without suspense, you have to write rectified statement. And beta, with suspense, you don't have to write any statement, but correct entry, wrong entry, rectification entry. Simple. Easy है. चलो बिफोर ब्रेक बेटा 5 नंबर का प्रॉब्लम कर लेते हैं. 5 नंबर, आईएमपी क्वेश्चन है. Correct the following errors found in the trial balance was out by 493 excess credit. बेटा क्रेडिट सस्पेंस को डेबिट आएगा. एक्सेस क्रेडिट मीन्स सस्पेंस ऑन द डेबिट साइड. सस्पेंस ऑन डेबिट साइड. रिमेंबर, इफ योर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट इज मोर, सस्पेंस इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ मोर बैलेंस. तो जो भी बड़ा बैलेंस है उसके अपोजिट साइड सस्पेंस लिखा जाता है. तो सस्पेंस को क्या आएगा? सस्पेंस को डेबिट आएगा. सस्पेंस को डेबिट आएगा. An amount of rupees 100
was received from D Das company but has been omitted to enter in cash book. बेटा कैश बुक में ओमिशन मतलब होल एंट्री नॉट पोस्टेड, whole entry not posted. So write down. With suspense we have to write statement. No बेटा without suspense. अरे क्या कर रही है श्रुति? सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया तो स्टेटमेंट लिखेगी, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया तो आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट ये आंसर होगा तो इसको लिखना विदाउट ओपनिंग सस्पेंस, और ये मैंने बताया आपको कैसे प्रेजेंट करना है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा और विथ ओपनिंग सस्पेंस होगा, विथ ओपनिंग सस्पेंस होगा तो आप करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे आप लोग पोस्टिंग करोगे। अभी इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता हूं, आप फिर ऐसा आंसर प्रेजेंट करोगे। और विदाउट ओपनिंग सस्पेंस में जहां जहां पे सस्पेंस अकाउंट होगा वहां वहां पे एक्सप्लेनेशन आएगा, और जहां पे सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। पूरा समझ में आया क्या श्रुति अभी कि कहां पे तू एक्सप्लेनेशन देगी? एक्सप्लेनेशन जहां पे देगी कि जहां पे हमने यहाँ पे सस्पेंस टू सेल्स एंट्री है तो वहां पे तू एक्सप्लेनेशन देगी। ओके हाँ बेटा मेघना, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस का फॉर्मेट यही रहेगा। वेरी गुड, ऐसा ही लिखना है मेघना जी। चलिए राइट डाउन। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू दास एंड कंपनी। दास, ओनली दास। 100, 100। नो एंट्री। So cash account debit to Das. 100, 100. Okay. Second one, total return inward short by ₹100. Return inward means sales return. Sales return has debit balance. So here, sales return account debit to suspense account. Short means same side. You can write there. Short means same side. 100, 100. Third one. Purchase of office table. 300. Pass through purchase day book. Furniture to creditors. Furniture to creditors. 300, 300. But you pass through purchase book. So purchases account debit 300 to creditors 300.
creditors same. Furniture same side, purchases opposite side. Furniture 300 to purchases 300 over fourth entry. 375 paid to wages for making showcase, charged to wages account. This is error of principle. This is also error of principle. Showcase, first one is error of omission. Second one is error of commission. So correct entry is showcase means furniture. You can debit showcase account or furniture account to cash. 375. But you debited wages account debit 375 to cash 375. So furniture purchase kiya. So furniture to cash. But you debited wages. What is same? Cash. So now फर्नीचर को डेबिट दो टू वेजेस 375. फर्नीचर टू वेजेस. Five number. A purchase 67 posted to trade payable account at 60. Okay. So purchases account debit 67 to creditors 67. Payable, creditor, payable. But you recorded purchases account debit 67 to creditors 60 and to suspense 7. Because you recorded 60. So suspense, difference is not matching. So suspense will be open. So here purchase same. Creditors you want 67, but you recorded 60. So 7 rupees से creditors बढ़ाना पड़ेगा. So creditors have to be increased by 7. Increase same side. And because it is 67, here 60. So you have to credit and suspense has to be cancelled. So suspense को debit देंगे 7. So suspense to creditors. Suspense to creditors. Suspense to creditors. Manish Jain. Krish Bothra, beta, best of luck. I am your batch 5 students. Yes, beta, our blessings are always with you. Manish Jain, thank you for the trick to solve rectification in 12th. ऐसा technique नहीं था. Thank you, beta Manish. Follow this technique for rectification. मोहम्मद खान प्रीपेड का अभी मैं फाइनल अकाउंट्स में बताऊंगा. इफ टाइम परमिट्स आज ले लूंगा, पर मुझे नहीं लगता है. प्रीपेड एक्सपेंस आपको अभी समझ में आया. प्रीपेड इज डेबिटेड, रिसीवेबल डेबिटेड, पेएबल क्रेडिटेड एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट. इतना याद रखो. ओके, फॉर्मेट. एंड आई विल टेक दिस इन फाइनल अकाउंट्स. तो फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे शायद से फाइनल अकाउंट्स में ही लूंगा. तो देखते हैं, उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. Because final accounts is the last part after rectification. So next step is P&L and balance sheet. देखते हैं. Six number. A check received from PC Joshi
Dishonor, check received. Sir, what is the check received की entry? Bank to PC Joshi. But dishonor means PC Joshi जिंदा हो गया. Now he becomes debtor. So again he is our debtor. So debtor debit balance. So what is the entry? PC Joshi account debit to bank. 200. But what happened? We debited allowance account. Oh, allowance account को डेबिट दिया. So allowance account debit to bank 200. What is same? Bang. PC Joshi same balance, allowance opposite balance. PC Joshi account debit to allowance account 200. Yes. एकदम इजी सर, एकदम इजी. Next, last 3 beta. Before break, last 3. Patience. 1,000 paid for purchase of motorcycle for Mr. Dutt. अभी बेटा for Mr. Dutt means बेटा for his, now I say is assuming it's not for his business. It's for personal driving. सर कैसे समझ में आएगा? By looking into answer. मुझे भी नहीं समझेगा पहली बार. Okay. So what I say expecting here, it's not asset account. Here it's a drawings. His personal. So entry will be चेंज किया है क्या ऐसे ने? आंसर देखने दो एक बार. नहीं, ड्राइंग्स ही रखा है. So drawings account debit to bank. His personal, it's not an asset. It's his personal motor bike. And miscellaneous expenses debit to bank. 1,000. Bank, correct. So rectification entry, drawing same balance. 1,000 to miscellaneous expense 1,000. To miscellaneous expense 1,000. It's very simple. बहुत simple है. 8 number. Goods amounting to 100 had been returned by customer. 100 returned by customer. Sales return to debtors. Sales return to debtors. Hundred. No entry. So same entry. Sales return to debtors. 100. And last one. A sale of rupees 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. Entry was correctly made in sales book. मतलब sales account में correct है. So Singh and Company debit to sales 200. But what happened? You credited sales correctly 200, but Singh and Company you wrongly credited. So debit suspense debit 400. Suspense debit 400. Now बेटा sales correct है, तो Singh and Company को डेबिट आना चाहिए.
Singh and Company debited. So this is debit 200, this 200, and cancellation plus 200. To suspense, we cancelled it 400. So Singh and Company to suspense. Wait. Now we have to see suspense account ka difference. What is the difference in suspense account? Let's see. Suspense account we are going to open. Suspense account we are going to open. Two balance brought down. So what is the balance in suspense, beta? What is the balance? 493. 493. Now entry by entry. First entry, no suspense. Second entry, suspense credit. Suspense credit 100. Buy sales return. Buy sales return 100. Furniture to purchase, okay. Furniture to wages, no suspense. Suspense to creditors. So suspense को debit दिया. To creditors, 7. Over. PC Joshi to allowance, no suspense. Drawings to miscellaneous expense, no suspense. Sales return to debtors, no suspense. And last entry, suspense is credited. So by Singh and Company. First write amounts. 500, 500. There is no difference in suspense. Suspense is tallying. Suspense tally hua. Suspense tally hua. You can see suspense account is tallying. So by looking into rectification entries, you have to open suspense account. So suspense account for the first time, second time you opened it, suspense account. IMP question. Yes. ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद हम लोग और 3 क्वेश्चंस करेंगे. अभी हमने कितने किए? 3, 4, 5. सो आफ्टर ब्रेक 6, 7, 8. इजी था ना ये भी? बड़ा इजी था ये भी. यस प्लीज यार, ये टॉपिक बहुत इजी है. डोंट skip it in the option. बहुत से बच्चे so rectification. अरे काय का rectification? It's very simple. Watch this session 2 times. खत्म हो जाएगा. Rectification in 2 hours का सेशन है, 4 hours में कंप्लीट हो जाएगा. एंड इधर आपको यस यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ. यस सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. दिस इज एरर ऑफ कमीशन. This is error, compensating error. This is compensating error. Then motorcycle, this is beta error of principal, because drawings is a personal account, miscellaneous expenditure is a nominal account. Error of principal. Then error of omission. Error of omission. And last one is error of commission, wrongly recorded in the books. Error of commission. So all errors I have given you. Which type of error? तो आपको इजी जाएगा. इट्स वेरी सिंपल फॉर यू. I say I won't ask you which error, that you have to understand. ठीक है? साधना सिंह सॉल्व किया था बोल रही है, फिर से रिवाइज किया तो थैंक यू. इजी होतं सर खूप, सर्वेश म्हणतोय. इजी था बहुत. श्रुति पाठक, यस सर इजी बट ओनली बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू बेटा आदिति. So it's very easy for me as science background student. अरे बाप रे रितु, this is most difficult chapter. It's too easy. It's too easy. Okay, प्रमोद भाई. चलो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट वंस. तो प्लीज प्लीज ब्रेक के बाद तुरंत आ जाइए. डोंट मिस द सेशन. थैंक यू. ब्रेक ले लीजिए.
Garu, continue. Next question. Illustration number 6. Now, this question is something which is different one. Affecting the trial balance. Now, what is the question? Whether this is going to affect your trial balance or not. So this is a new question. Understand the answer. Yes. Write down. Again, correct entry, wrong entry, rectification entry. Correct entry. Wrong entry. Rectification entry. Correct entry, wrong entry, rectification entry. First entry. Sale of old furniture treated as sale of goods. Sale of old furniture treated as sale of goods. So this is error of principle. Cash account debit 150 to furniture goes out 150. Cash comes in, furniture goes out. Sales entry will be, sales is our income, so credit balance and cash comes in. Cash account debit 150, sales 150. What is correct? Correct. Cash, correct. And what is wrong, beta? Furniture same balance to furniture 150 and sales cancelled. Sales account debit 150. Sales to furniture. Sales to furniture. Receipt of 500 from Ram Mohan. Credited to Sham Sundar. Credited. Now this is IMP. No. This is very simple. Simple. Receipt of. So Ram Mohan is a giver. So cash account debit to Ram Mohan. 500. But you debited to cash account is debited correctly to Sham Sundar. 500. Cash account debit. Ram Mohan we are going to cancel. And Sham Sundar debited. Sham Sundar to Ram Mohan. Third one. Goods worth rupees 100 bought from Mohan Narayan have remained unrecorded. Purchase debit to Mohan Narayan. 100. No entry. So purchases account debit to Mohan Narayan 100. Very simple. So second one is compensating error.
This is error of omission. Third one is error of omission. Fourth one, a return of 120 from Mukesh posted to his debit. A return from Mukesh. So beta, this is sales return. From means sales return. उसने रिटर्न किया. So sales return to Mukesh. Sales return to Mukesh. 120. But we debited Mukesh. It doesn't mean that sales return is not recorded correctly. Sales return को डेबिट ही आएगा. Sales return को डेबिट ही आएगा and Mukesh is also debited. Sales return to sales return account debit, Mukesh account debit to suspense. 240. Sorry. Sales return correctly recorded. Sales return correctly recorded. Mukesh to Mukesh. 120 plus 120, 240. And suspense we have to cancel. Suspense account debit 240 to Mukesh 240. Sales return is correctly recorded. Now this is beta error of commission. This is because you wrongly posted it. Error of commission. बेटा अंशिका एरर्स आपको समझ में आने पड़ेंगे. वो आप थोड़ा आप रिवीजन करना, अपने आप समझ में आएगा. मिस्टेक सी, नाम बदल गया तो कॉम्पेंसेटिंग. नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया या रियल अकाउंट हो गया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल. एंट्री ओमिट कर दिया तो एंट्री ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन. एंड अमाउंट्स वगैरह लिखा गलत तो बेटा एरर ऑफ कमीशन, अलग अकाउंट में लिख देना. A return of 90 to Sham Sundar posted ₹9 in his account. This is error of commission, calculation error, posting error. Sham Sundar to purchase return. To purchase return. See here, return of return to Sham Sundar. Now to means purchase return. So from is sales return. To को राउंड कर दीजिए. To purchase return. 90. श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 9. एक लाइन छोड़ के to purchase return, it's correctly recorded 90. So suspense debit 81. Suspense is debited by 81. So what is correct beta? Purchase return correct. श्याम सुंदर instead of 9 बढ़ाना है. So we have to increase balance. अपवर्ड जाना है. So अपवर्ड जाना है तो सेम साइड. श्याम सुंदर डेबिट 81. 2 बढ़ाना है इसलिए सस्पेंस को कैंसल्ड 81. So श्याम सुंदर टू सस्पेंस 81. 6th एंट्री इजी है. अभी 5 भी हो गया. लास्ट 4 वेरी इजी.
वेरी इजी बेटा दिस क्वेश्चंस. चलो. रेंट डेबिटेड रेंट टू प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस. अच्छा. प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस मतलब ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स को डेबिट देना था. His own property. Drawings debit to cash. Personal account. Now rent account debit to cash. Tell me nominal account. Which error? Drawings debit to rent 600. Now you only tell me na beta fast. Which error beta? Which error? Error of yes beta error. Who is going to identify this fast? कौन है? नहीं 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 बेटा कॉम्पेंसेटिंग नहीं बोलेंगे. हाँ कॉम्पेंसेटिंग हो सकता है अंशिका. बट इधर ड्रॉइंग्स इज अ पर्सनल एंड रेंट इज अ नॉमिनल. सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है. कॉम्पेंसेटिंग यू कैन राइट इट. बट मोर करेक्ट इज बेटा नेम्स जब बदलते ना नेम्स नेम्स रहेंगे तो कॉम्पेंसेटिंग. अदरवाइज बेटा प्रिंसिपल. वेरी गुड आदित्य मनीष. वेरी गुड बेटा. A payment of rupees 215 to Muhammad Sadiq. Now this is payment, beta. Please, this is IMP1. You can make a mistake. Posted to his credit. Credit. This is error of commission. 7 number payment. Muhammad Sadiq MS. बेटा मोहम्मद सदीक MS. पूरा नहीं नाम लिखूंगा. MS to cash. No beta, this is commission. 215. 215. But we recorded to cash 215 and his account is credited. MS को क्रेडिट किया 125. सो रेड पेन से लिखना सस्पेंस डेबिट. MS को क्रेडिट किया. वी हैव क्रेडिटेड MS अकाउंट 340. तो सस्पेंस इज डेबिटेड 340. सस्पेंस को डेबिट किया 3. MS बेटा सस्पेंस वी हैव MS वी हैव टू गिव डेबिट 215 plus 125 to suspense 340 to suspense 340. MS to suspense. Very, very important entry. Important 7th one. Sales book short rupees 900. Short means बेटा same side. तो सेम साइड सेल्स को देना है. सो सस्पेंस टू सेल्स. सस्पेंस टू सेल्स. सस्पेंस टू सेल्स बेटा एरर ऑफ कमीशन. हाउ मच? 900. 7th entry is important one, huh? And 9th entry. Bills receivable book unposted. Unposted. Bills receivable account debit to suspense account 1500. Now beta, whenever there is suspense account, whenever there is a suspense account, it is not going to tally. So beta either trial balance will agree. यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री होगा. हियर नो सस्पेंस, so trial balance will agree. Here beta trial balance will not agree. So trial balance will not agree. Suspense to Mukesh. Suspense to Mukesh तो एंट्री में एग्री नहीं होगा. So trial balance. Okay.
सो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है? रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस को डेबिट है. रेक्टिफिकेशन, सी द सेंटेंस. हाँ, ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस डेबिट. रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस डेबिट, इट मींस इन रॉन्ग एंट्री सस्पेंस इज क्रेडिट. करेक्ट है? रॉन्ग एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट था. सस्पेंस इज क्रेडिट मतलब बेटा डेबिट साइड इज मोर and credit side is short. So you have to write credit side, credit short by rupees 240. तो आपको क्या लिखना है? तो एक वेरी सिंपल, सस्पेंस रेक्टिफिकेशन में डेबिट है, so you have to write credit short by rupees 240. What you have to write? Opposite balance short by rupees 240. बस इतना लिखना है. Now श्याम सुंदर to suspense. So suspense को क्या है? Yes, trial balance will not agree. सस्पेंस को क्रेडिट है, तो डेबिट शॉर्ट बाय 81. That you have to write. Debit short by 81. Drawing student, trial balance will agree. Now 340, suspense को क्रेडिट है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री एंड डेबिट शॉर्ट बाय 340. डेबिट शॉर्ट बाय 340, ये आपको लिखना है. सस्पेंस को डेबिट है, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री एंड क्रेडिट शॉर्ट बाय रुपीज 900. क्या लिखना है? क्रेडिट शॉर्ट बाय रुपीज 900. एंड सस्पेंस को क्रेडिट मतलब ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, डेबिट शॉर्ट बाय रुपीज 1500. डेबिट को शॉर्ट रखा है 1500. सो इफ सस्पेंस को क्रेडिट है तो डेबिट शॉर्ट, इफ सस्पेंस इज डेबिटेड क्रेडिट इज शॉर्ट. दैट ये लाइन यू हैव टू लाइन, ये फर्स्ट टाइम है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन. Whenever there is suspense account, trial balance will not agree. If there is no suspense account in trial balance will rectification entry, trial balance will agree. तो आपको कैसे लिखना है? देखो, I will divide this answer. Trial balance, no suspense, agree. Agree means tally. Suspense. Now suspense को rectification entry में, in rectification entry, suspense debit means credit short by. Credit short by. So this is a summary. So you have to write this in 100 pages notebook. 100 pages notebook में लिखो. Write this summary. And credit in rectification entry to debit short by dash 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 dash. So this you have to write it in 100 pages की notebook में. So remember, if no suspense means your trial balance is going to tally. In rectification entry, if there is a suspense on debit side, so you have to write credit short by, and if suspense is on the credit side, you have to write debit short by. Easy. So 1 mark for this question. Yes. समझ में आया क्या? 100 पेजेस की नोटबुक में लिखना. देखो, ट्रायल बैलेंस में यदि सस्पेंस नहीं है, रेक्टिफिकेशन एंट्री में, सॉरी ट्रायल बैलेंस क्यों लिखा है मैंने? इन रेक्टिफिकेशन एंट्री, इन रेक्टिफिकेशन एंट्री नो सस्पेंस, तो ट्रायल बैलेंस एग्री. सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री. ट्रायल बैलेंस एग्रीज एंड ट्रायल बैलेंस नॉट एग्रीज. 100 पेजेस के नोटबुक में लिखना इन रेक्टिफिकेशन एंट्री. यस, अंडरस्टूड दिस? अरे अंडरस्टूड और नॉट? चलो जल्दी से बोलो. ये लास्ट पॉइंट अंडरस्टूड? क्लियर? 100 पेजेस के नोटबुक में रिटर्न. यस, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन. मेनी स्टूडेंट दे आर नॉट गेटिंग इट.
सर रेक्टिफिकेशन एंट्री का ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट कैसे होता है? रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट है तो यू हैव टू राइट क्रेडिट शॉर्ट बाय, एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस को क्रेडिट है तो यू हैव टू राइट डेबिट शॉर्ट बाय. ओके, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. संकेत सर, स्टूडेंट्स विल गेट 100% मार्क्स. ये कभी भी ऑप्शन में नहीं रखेंगे वो. शॉर्ट शॉर्ट बेटा कुछ चुटकुले बता दिए आपको, एकदम बेसिक थिंग्स कैसे याद रखने का. हाँ सी बेटा, वी फर्स्ट विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 8. इलस्ट्रेशन 8 के बाद हम लोग वापस आएंगे इलस्ट्रेशन 7 इफ टाइम परमिट्स. ओके, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन 8. दिस इज सब्सिक्वेंट ईयर क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट ईयर रेक्टिफिकेशन. तो नॉमिनल अकाउंट्स को कौन लेगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट्स रिप्लेस बाय, सो नॉमिनल अकाउंट्स रिप्लेस्ड बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट. राइट डाउन subsequent year rectification, subsequent year rectification. So nominal accounts replaced by P&L adjustment. अरे बेटा इजी है. Nominal accounts replaced by, no बेटा, no narration for correct entry and wrong entry. चलो Mr. Roy was unable to agree trial balance last year and difference is written in the P&L of that year. Next year he appointed chartered accountant and found the mistakes. Next year. So next year means nominal accounts replaced by, nominal accounts replaced by nominal accounts replaced by बेटा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट को किससे रिप्लेस करना है आपको? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट. मिस मोहक रॉय, सर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट होकर भी मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सर. बेटा उल्टा मैं उल्टा बोलता हूँ, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही सबसे ज्यादा अकाउंट्स को समझ सकते हैं क्योंकि वो जीरो नॉलेज होता है ना. ये इनका कैसे हुआ है, 11-12 कॉमर्स में कुछ तो अलग ही पढ़ाया जाता है, और अलग पढ़ाया जाता है मतलब इतना लॉजिकली बहुत से फैकल्टीज पढ़ाते नहीं है. तो होता क्या है कि इनका बेसिक थोड़ा वीक रह जाता है, और बेसिक वीक आपका कैसे, आपको कुछ पता ही नहीं तो आप डायरेक्टली मेरा टेक्निक अप्लाई करते हो. इनके दिमाग में कुछ आधा अधूरा है ऑलरेडी और वो मुझे मिटाना पड़ता है, तो इसलिए आपको इजी जाता है. ओके, सो आप हो, रितु हो, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देखो एंट्रीज की प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी एट द एंड. चलो परचेस ऑफ स्कूटर was debited to conveyance account. ओके, एंड स्कूटर का डिप्रिसिएशन 10% है. स्कूटर का डिप्रिसिएशन कितना है? 10%. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? चलो लिखो करेक्ट एंट्री. रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री. Now, beta, first transaction is IMP1. Mark is as IMP. Scooter account debit 3,000 to bank. And remember, scooter is a real account.
depreciation to scooter, beta, depreciation is a loss and scooter value reduces. Depreciation means, science background student, reduction in the value of asset. Reduction in the value of asset is called as depreciation. So depreciation to scooter 10%, 3,000 into 10%. But you debited conveyance account debit to cash. So conveyance to cash. So C or bank, cash or bank. So cash correct. Now see the balance. Here depreciation 300 balance debit and scooter 2,700 डेबिट. सी 3,000 स्कूटर को डेबिट बैलेंस है, स्कूटर को डेबिट है 3,000 एंड स्कूटर को क्रेडिट है 300. सो 2,700 से डेबिट है एंड डेप्रिसिएशन को 300 है. एंड कन्वेंस टू कैश, कैश करेक्ट है. So now, बेटा स्कूटर को कितने से डेबिट देना है? स्कूटर डेबिट बाय 2,700, depreciation debit by 300 and to conveyance 3,000. Conveyance we have to cancel. So beta depreciation is a new entry in this question. कौन सी एंट्री नहीं है? depreciation. See, after depreciation scooter balance is 2,700 and depreciation debit 300. एंड कन्वेंस को आपको कैंसल करना है. सो कन्वेंस को क्रेडिट देना पड़ेगा. कन्वेंस को क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा. कन्वेंस को क्रेडिट देना पड़ेगा. सो नाउ these two are nominal accounts. So these nominal accounts replaced by debit 300 and credit 3,000. It is replaced by, now very important, scooter account debit to P&L adjustment 2,700. Replaced by P&L adjustment. Debit 300, credit 3,000 means credit more by 2,700. P&L adjustment. अंकित जाजी, बिफोर रेक्टिफिकेशन एंट्री ट्रायल बैलेंस की हालत क्या थी ये पूछा जाता है. सो ट्रायल बैलेंस टैली हुआ या नहीं हुआ ये पूछा जाता है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आईएमपी मार्क करके रखो. यस, ट्रिकी है. सी वंस अगेन देखो, स्कूटर टू बैंक तो एंट्री किया, पर डिप्रिसिएशन टू स्कूटर, तो डिप्रिसिएशन में कितना बैलेंस है? 300 एंड स्कूटर में कितना बैलेंस है? 2,700. बोथ आर डेबिटेड. उसके बदले में आपने किसको डेबिट दे दिया? कन्वेंस को. कन्वेंस को डेबिट दिया तो उसको कैंसिल करेंगे और स्कूटर और डिप्रिसिएशन को डेबिट रखेंगे. पर अभी डिप्रिसिएशन और कन्वेंस को रखना नहीं है, तो उसके बदले में किसका नाम आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट. और क्रेडिट साइड मोर है, सो स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट. थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है. स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट इजी. चलो सेकंड वन, परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट. ओवरकास्ट मतलब अपोजिट साइड. सो परचेस को क्रेडिट करना है. सो एंट्री विल बी सस्पेंस टू परचेस. बट बेटा परचेस इज नॉमिनल अकाउंट, तो आप लोग क्या एंट्री करोगे? इंस्टेड ऑफ सस्पेंस टू परचेस, सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. सस्पेंस के इसको रिप्लेस बाय कौन? रिप्लेस्ड परचेसेस. P&L एडजस्टमेंट किसको रिप्लेस किया? परचेसेस को रिप्लेस किया. ओके
In exam, don't write replace purchases. It is only if asked in the question for suspense to P&L adjustment. Third one. A credit purchase from P 2000 was entered as sales. So whole entry is galat. No suspense account. Purchase to P 2000. P to sales 2000. Purchase debit, sales debit to P. Now already done these entries, so I'm not going to explain this. Purchased sales to P, and purchase and sales replaced by beta P&L adjustment 4000. So P&L adjustment to P. So final entry will be P&L adjustment to P. So in exam directly write P&L adjustment to P, but for here only for explanation I am writing purchase sales to P. Okay, so P&L adjustment to P. Nominal account लिखेंगे P&L adjustment to P. Easy. Next, receipt of cash from A posted to B. So cash account debit to A. Cash comes in to A 1000, but you recorded cash to B 1000. कौन correct है? 1000 correct है. So to A and B account is debited. B account debit to A 1000. Beta no nominal account, so no P&L adjustment. No nominal account, so no P&L adjustment. Fifth entry. Receipt of C posted to debit of his account. Okay, so what is the entry? Cash account debit to C. How much? 500. But you recorded as cash account debit 500. C account debit 500 to suspense. Suspense 1000. Already done this entry. Already done. तो बेटा C को क्या करना है? C को क्रेडिट 500 एक करेक्ट एंट्री का एंड रॉन्ग एंट्री का कैंसल 500. सो सस्पेंस टू C 1000. Suspense to C 1000. Fifth entry over. Sixth one. $500 due by Mr. Q omitted to be taken into trial balance. अच्छा, ड्यू मतलब रिसीवेबल. ड्यू मतलब रिसीवेबल. रिसीवेबल आने वाला था ड्यू बाय क्यू, तो हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया. सो एंट्री विल बी नाउ क्यू अकाउंट डेबिट. Directly you can write Q account debit to suspense account, because now we have to record that Q. So Q account debit to suspense. Directly in Q account debit to suspense. 7 number entry. Sale of goods to R was omitted. So R account debit to sales account. What is the correct entry? R to sales. Sales is our income. R is our debtor. But no entry. So R account debit to sales, but instead of sales, P&L adjustment. P&L adjustment. 8 number entry. Purchases wrongly posted 2395. So purchases to X or to creditors. Purchases to creditors 2395. We recorded as purchases account debit 25
93 to creditors correctly recorded to suspense. 2593 minus 2395. 198. Now purchases has to be reduced. Instead of purchases, P&L adjustment 198. Suspense को डेबिट देंगे 198. Suspense to P&L adjustment. Suspense to P&L adjustment 198, 198. Now we will open suspense account and P&L adjustment account. Suspense account 5 lines, P&L adjustment 5 lines. Now see, first entry. Scooter to P&L adjustment. So P&L adjustment को credit किया. By scooter. By scooter. So P&L adjustment by scooter. You can write it afterwards. पहले ध्यान दीजिए. By scooter. Second एंट्री की अमाउंट क्या थी 10,000. ओके. सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट. तो सस्पेंस के डेबिट में एंड P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में. बाय सस्पेंस एंड हियर टू P&L एडजस्टमेंट. ऑलवेज राइट अमाउंट फर्स्ट. देन B2A नहीं आएगा. सस्पेंस टू C. तो सस्पेंस को डेबिट दिया टू C 1,000. Q to suspense. So suspense को क्रेडिट किया by Q. R to P&L adjustment. P&L adjustment के क्रेडिट में by R's account. And last entry suspense को डेबिट, P&L adjustment को क्रेडिट 198. एंड एक रह गया P&L एडजस्टमेंट टू P. ये रह गया था P&L एडजस्टमेंट P 4,000 एंड हियर बाय सस्पेंस एंड टू P&L एडजस्टमेंट. इजी. नाउ सी balancing figure. We will transfer it, red pen, by Roy's capital. Where to transfer this? Balancing figure Roy's capital. कितना आ रहा है देखो 10,000 plus 1,000 plus 198 minus 500. 10,698. And P&L adjustment is also transferred to Roy's capital. To Roy's capital, see the answer 2,700 plus 10,000 plus 2,000 plus 198 minus 4,000. 10,898. 10,898. And you have to pass two entries. What are last two entries? Roy's capital to suspense. So this will carry 2 marks. And P&L adjustment to suspense 10,898. So beta, this is how you have to close two accounts and where to transfer. So last day revision note, suspense account and P&L adjustment account transferred to capital accounts. Okay, write down 100 pages के नोटबुक में लिख के रखो. Suspense and P&L adjustment. क्या लिखोगे? Suspense and red pen P&L adjustment transferred to capital account. Refer ILU 8. Refer ILU 8. रेफर कीजिए ILU 8. थोड़ा सा मुश्किल है बट अभी इजी हो गया. सो सी ऐसे की भी एंट्रीज होंगी. रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस, P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस कैपिटल,
and Roy's capital to suspense. P&L adjustment capital and Roy's capital to suspense. IMP entries. आंसर में देखिए. Understood? So finally balance is transferred to capital account. किधर बैलेंस ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट. यस बेटा, एक्सपेंडिचर इनकम दोनों भी लेना है, डेबिट क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफर करना है P&L एडजस्टमेंट में. दिस नीड्स टू बी प्रैक्टिस. यस अंशिका, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये क्वेश्चन मार्क एज आईएमपी क्वेश्चन. इंडेक्स मैंने ऑलरेडी दे दिया था आपको. इंडेक्स तो ऑलरेडी दे दिया था. Now TYK you can do by your own. I have covered all types. B category, and 8 number is A plus category. Last में P&L adjustment and balance is transferred to Roy's capital. इंडेक्स भी दिया था. और if you want to take index बेटा, please write index afterwards. आपके फेयर नोटबुक में लिख देना इंडेक्स. चलो. सो बेटा नाउ सम एग्जाम टिप्स. और अभी मैं आपके साथ थोड़ा लंबे से जुड़ूंगा बेटा. अभी हम लोग 15-20 दिन के बाद आएंगे वापस. सो टिल दैट टेक केयर बेटा. प्लीज डू योर होमवर्क प्रॉपरली. मेंटेन योर नोटबुक्स. थोड़ा सा भी खुद को ऐसा इग्नोर मत कीजिए कि एग्जाम के इसमें चलो मैं दूसरा कुछ करता हूं. एकदम बेसिक टिप्स दे रहा हूं. ये 2-4 महीने आपके इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम भी आपकी आने वाली है. 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम में भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इट सिंसियरली. डोंट वेस्ट योर टाइम. ये तो हमेशा सब बोलते हैं, जितना एडिक्शन होता है वो चीजों से दूर रहना. ओके और बहुत पढ़ाई करना. आपके नोटबुक्स को मेंटेन करना. नॉट ओनली माय सब्जेक्ट बट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. ओके सो प्लीज डू इट केयरफुली. जितना भी हो सकता है आज का मत सोचिए. ऑलवेज थिंक फॉर द फ्यूचर. देखो आज मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ इज नॉट फॉर टुडे. मुझे मिलेगा, पर इफ आई नॉट डोंट सेव इट तो बेटा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा डेंजर जाएगा. सो आई टू टेक माई LICs पॉलिसीज. दक्ष के लिए भी सब कुछ करके रखना है. सो होमवर्क इज ऑल्सो. और बेटा यूर CA कोर्स इज ऑल्सो सिमिलर. whatever you are studying today, please make some notes. It's very important. At the time of revision, it will help you. So always, whenever you are studying, always think for day before exam, 1 day before exam notes. Don't think for today. Sir, today I'm understanding it. But beta after 4 months, कुछ भी याद नहीं आता है. Total memory 0 होता है. And therefore you need lot of revisions. ओके सो रिक्वेस्ट है, मिस तो मैं करूंगा आप सबको. और कुछ फॉर्मेट बिरमैट्स रह जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज बेटा आस्क मी इन नेक्स्ट सेशंस. तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा. एंड दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यू कैन कॉन्टेक्ट पुणे ब्रांच. तो आपको भी अकाउंट्स के वीडियोस होंगे वो आपको मिल सकते हैं. मेरे स्टार्ट टू एंड विद स्कैनर सब उसमें पड़े. तो आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हो पुणे ब्रांच को. दिस इज अगेन दी ब्रांच का ही है. आई एम नॉट टेकिंग एनी प्राइवेट क्लासेस. तो एक्टिविटी वाइज ब्रांच को ही जाता है पूरा. तो आप लोग उसको भी कांटेक्ट कर सकते हो. आप गूगल से ये देख ले सकते हो कि आपको बाकी टॉपिक्स कभी हिंदी में चाहिए रहेगा तो. यस सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. आई एंजॉयड अ लॉट. और आपकी बैच में मुझे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स मिले जो आंसर्स अच्छे से करते थे. ओके तो मैं आपको वापस मिलूंगा. थैंक यू. यस थैंक यू बेटा. बाय. ठीक है क्लोज कर दीजिए.